बात करने वाले हैं कारगिल टू यूक्रेन, आर्टिलरी मेक्स द डिफरेंस। क्यों? कल कारगिल विजय दिवस है। कल वो दिन मनाया जाता है हमारा देश में जब हमने पाकिस्तान को परास्त किया। We defeated them conclusively. And in that defeat, artillery played a huge role. So I thought it appropriate that we should discuss how artillery played a solid role, a decisive role in our victory in Kargil. But बात यह है कि इसके पिछले एक साल के अंदर अंदर यूक्रेन का लड़ाई भी छिड़ गया एंड आर्टिलरी हैज occupied center stage in that battle. Everyone talks of artillery. John Mearsheimer says, आज के दिन अगर किसी लड़ाई में कोई देश जीतना है उसको दो चीज चाहिए। एक, आदमी चाहिए उसको, मैन पावर, और दूसरा आर्टिलरी चाहिए। और ये जो चीज उसने बताया है और बाकी जो घटनाएं हुई हैं आर्टिलरी के बारे में या युद्ध के बारे में इन यूक्रेन, हमारे लोगों के अंदर एक संकोच पैदा हो गया कि क्या भारत के पास उतना आर्टिलरी है? क्या भारत चीन के पास जितना जो आर्टिलरी है उसको हम दूर रख सकते हैं? It's only natural that we come to this, we have doubts as to whether we can handle the Chinese artillery, whether India has enough artillery, etc., 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 etc. That is why I thought, and a lot of people also ask me, so why don't you compare the artillery of Ukraine and our artillery and what all has happened and all? I said, wait, let me wait. That is why about 10 days back, 10 दिन पहले हमने इंडियन आर्टिलरी yesterday, today and tomorrow के बारे में विश्लेषण किया और आपको बताया कि हमारा आर्टिलरी किस दिशा में कितने बड़े बड़े कदम ले रहे हैं. We have one of the most potent artilleries in the world. I mean, you can take it from me. I am very confident. I told you that we have fought in all wars and we fought in Siachen, we fought in high altitude and all that, in Kargil, of course. So we have to see this in the light of how artillery has been employed in Kargil and how artillery has been employed in Ukraine. उससे हमें पता चल जाएगा किस तरीके से आर्टिलरी को इस्तेमाल किया गया है दोनों युद्ध में, कि हमारे पास क्या शक्ति है या नहीं है. Right, so this is the background in which I thought we should, discuss artillery. Okay. Now, before I go further, मैं बताना चाहता हूं सबको, I have already made an analysis of this. ये मेरा वेबसाइट में है, आप गन्ना शॉट में जाइए. Open this. This is the heading: Ukraine to Kargil, the winning edge of artillery. I have written already. Please read it. There I have compared what happened in Ukraine and what happened in Kargil. But you don't have the time. आपके पास टाइम नहीं है, तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे. Okay. Right. दूसरी बात यह है कि ये दो दृश्य देखिए. See these two, pictures. एक आर्टिलरी और एक इन्फेंट्री. कोई भी लड़ाई में fire and move is basic. If you cannot fire and move, you will not win the war.
Everyone says artillery is the god of war. I am sure artillery is the god of war. I am a gunner. जिंदगी भर मैंने इन्हीं गनों के साथ खेला है, बड़ा हुआ हूं और कमांड भी किया. और कारगिल में मैं वहीं था. आई वॉज नॉट इन कारगिल बिकॉज क्योंकि हम दूसरे नेबरिंग सेक्टर में थे. अगर मौका पड़ा तो हमें अंदर जाने के लिए पाकिस्तान के अंदर हमें हुक्म दिया गया था. ओके, ये है गन्स. दूसरी बात, आपको मूव करने के लिए इन्फेंट्री चाहिए, और यही है हीरोज ऑफ कारगिल असली इन्फेंट्री. मेरे इन्फेंट्री भाई, हमें फकर होना चाहिए इंडिया में कि सबसे तगड़ा इन्फेंट्री हमारे देश में है. अगर ये दोनों का मिश्रण ठीक नहीं है और इन दोनों का संतुलन ठीक नहीं है, इन दोनों का मेल मिलाप ठीक नहीं है, हमारा आर्टिलरी और इन्फेंट्री का, कोई लड़ाई नहीं जीतेंगे हम. ये मेरे से लिख के ले लीजिए. रशिया, despite having so much artillery with it, so much firepower, and so much preponderance over Ukraine, has not won the war because it could not fire and move. Why did it not move? It could not move because it did not have the infantry which India had. Tomorrow, a lot of people will talk of capture of Tololing, capture of Tiger Hill, and all other places. It was done by the indomitable spirit of my infantrymen. मेरे infantry के. And the artillery was there to ensure the infantrymen reaches top of Tiger Hill. जिस तरीके से इस पिक्चर में दिखाया गया. पर आज, क्योंकि कल इसके बारे में बहुत चर्चा होगा, मैं आज आर्टिलरी के ऊपर सीमित रखता हूं. ओके, राइट. बिफोर आई गेट ऑन टू देखना क्या है, ये है, आई शो यू अ स्मॉल पिक्चर ऑफ व्हाट आर्टिलरी इज टुडे. या मैं देख रहा हूं कोई पूछ रहे हैं शूट एंड स्कोट के बारे में, कोई पूछ रहा है हमारे रॉकेट आर्टिलरी के बारे में बताइए, हमारे गन्स के बारे में बताइए. वो नहीं बताऊंगा आज, क्योंकि ये सब मैंने पूरा एक वीडियो निकाला है ऑन आर्टिलरी. आर्टिलरी yesterday, today and tomorrow. और आप सब लोग उसको देख सकते हैं. और कल सुबह I will put an edited version of that out. So please see that. आज इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको देखिए, आपको बिल्कुल आपको पता चल जाएगा where India is. Okay. Today we'll see this, which is more important. ये आज है हमारा. This is the artillery of today. So this, oh sorry, this is your artillery, which is there today and it is going to be there tomorrow. Abhi, we'll go back into time and see what happened earlier. Okay, I spoke of fire and move. We'll do this in two parts.
We will talk about Ukraine, और उसके बाद we will talk about Kargil. When Ukraine happened, a lot of people said Ukraine's artillery might be winning the war with Russia. That's what Forbes said. Ukraine's heavy artillery will cause Russia a world of pain. Popular mechanics. They are in hell. Hail of Russian artillery tests Ukraine morale. This is what Washington Post had a headline. Artillery is playing a vital role in Ukraine. The economics said so. One village at a time, the grinding artillery war in Ukraine. This is what the New York Post said. Right? So, this is what artillery has been catching everyone's popular imagination on, in the world. And that is why artillery has been played a great role. Now, let me analyze this further. What is the feel of firepower in battle? This is what Ukraine people have said. You have to read it with a little closer because you will not see what it is. He says a report from New York Times says just to move about town, Ukrainian soldiers accelerate to breakneck speeds in their SUVs, screech around corners, zip into courtyards, then pile out and run for cover. They see us and they open fire. There's no place in this town that is safe. The need to move quickly or become a vulnerable target. The need is to move quickly or become a vulnerable target for Russian artillery. कहीं भाग के नहीं जा सकते थे. रशियन आर्टिलरी यूक्रेन को पीस रहा है धीरे धीरे धीरे. And they further say it starts with a loud whistle. You feel something fly past, then comes the explosion, followed by the blast wave. Last is a shrapnel, which swarms through the air like flies. All you want to do is hide. Shooting at you, you have a clear idea of how to fight, of where to direct your adrenaline. But when a piece of metal is flying at you, you don't know where the enemy is and how to survive. I'm a rifleman. I have no weapon to defend myself from that. This is what the Ukrainians have had to say. The Pakistanis also say this. पाकिस्तानियों को भी यही फीलिंग था कारगिल के ऊपर, टाइगर हिल के ऊपर, तोलोलिंग के ऊपर. फर्क एक ही था, यूक्रेनियन वालों को भागने के लिए जगह था, पर पाकिस्तानी को वो नसीब नहीं था, क्योंकि वो मर गए थे वहां. हमारे आर्टिलरी उनके सर पे पड़ा था. और अभी उल्टा हो रहा है थोड़ा बहुत. यूक्रेन ने जो है रशिया के ऊपर वार कर रहा है, यही कहानी है. पर पाकिस्तान हमारे अगेंस्ट कुछ नहीं कर सका. उसके बारे में भी बात करूंगा. राइट. If you see Ukraine war was a modern war. In this modern war, artillery was used for seamless employment of nuclear and conventional power in a destructive and deterrent role simultaneously and interchangeably. You saw air, hypersonic, cruise, guided missiles, rockets, and guns were used again seamlessly. You also saw, हमने ये भी देखा है कि the battlefield was static for long periods. But the long-range firepower opened up the battlefield to generate strategic maneuver. क्योंकि फायरिंग हो रहा था, ये मैनूवर स्ट्रेटेजिक हो गया. ऑन ग्राउंड कोई हिल नहीं रहा था, but the battle was moving all over Ukraine. Artillery overcame terrain friction. It was a deep battle of a different kind which we have seen today. Some part of it we saw in Kargil. कारगिल में क्या हुआ था कि the firepower enabled maneuver. Here the firepower itself was maneuvering with strategic advantage to create strategic maneuver. आज इधर फायर करो, कल उधर फायर करो, परसों उधर फायर करो. But in Kargil,
We fired at the enemy, enabled infantry to move. The problem with Russia was their infantry didn't move. When they wanted to move, they had to get Wagner in Bakhmut. Okay, now in Ukraine, one thing which stands out is that there's a clear correlation between the firepower, application of firepower, and political objectives, which did not come out in Kargil operation for the simple reason Kargil जो है वो सीमित battle था, whereas Ukraine was a large battlefield. It was between nations. There were geopolitical issues. It's almost next to a world war. So what were these things? If you saw, initially Putin said Ukraine should not be part of NATO. So for that, he used deterrence. He used nuclear threat to keep NATO out. Even now, he is doing it. He is using hypersonic missiles to signal NATO that escalation was feasible. NATO got sidelined, and but Ukraine almost capitulated to this demand. ये झुक गए थे. But NATO की वजह से अभी डटा रहे. और क्योंकि NATO आर्टिलरी यानी अमेरिका से आर्टिलरी और मदद मिला, ये थोड़ा स्टिफ हो गए. उन्होंने पहले बताया प्यूटिन ने डोनेट्स्क एंड लुजान्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज इंडिपेंडेंट स्टेट एंड क्रीमिया टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ रशिया. और उसके लिए प्यूटिन ने अपने फौजों के साथ आर्टिलरी को ट्रेडिशनल रोल में मोबाइल कॉलम्स के साथ इस्तेमाल किया. पर मोबाइल कॉलम हिले ही नहीं, वो अलग बात है. यूक्रेन टू बी डीमिलिटराइज, उसके लिए इसने डिस्ट्रक्शन किया आर्टिलरी के साथ. एयर और मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन यूक्रेनियन बेसिस इन द वेस्ट टू कट ऑफ मिलिट्री एड. बाद में दीज अटैक्स वेंट ऑन टू सिटीज. कीव के ऊपर फायर किया, ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर फायर किया, जितने पावर प्लांट हैं यूक्रेन के ऊपर फायर किया. राइट, सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ Ukrainian war waging capability, ammunition, fuel, and logistics, destruction of Ukrainian defense industry, destruction of Ukrainian firepower and military elements. ये चीज क्या है? इनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के साथ जुड़े हुए. कारगिल में ये चीज दिखाई नहीं देता हमें, क्योंकि वो छोटा बैटल था और सीमित था, और वो 10-15 दिन के अंदर खत्म हो गया. दूसरी बात यूक्रेन में जो दिखाई देता है, और वो हमें सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इनोवेटिव यूज ऑफ फायर पावर, जिसमें फायर पावर एम्बिशंस उन्होंने लगाया. ट्रैक एंड किल ऑफ एनिमी फायर पावर एंड फोर्सेस हो रहे हैं दोनों तरफ से, और स्पॉइलिंग अटैक्स भी किए जा रहे हैं. ये चीज नए हैं, हमें सीखने की जरूरत है, क्योंकि वही बात है, कारगिल में ये सब ऐसे फायर पावर मैनूवर्स के लिए जगह भी नहीं था. ओके, फायर पावर किस लिए इस्तेमाल किया गया था यूक्रेन में? पंच होल्स इन एनिमी डिफेंसेस टू एनेबल एंड जनरेट मैनूवर. उतना तो हमने और भी किया कारगिल के अंदर. कॉन्वर्सली, फायर पावर हैज आल्सो बीन यूज्ड टू प्लग होल्स, फिक्स एंड रेस्ट्रिक्ट एनिमी मैनूवर. इसका नौबत कारगिल में आया नहीं. सेंसर शूटर इंटीग्रेशन हुआ, क्योंकि इसमें ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए थे काफी हद तक, दोनों तरफ, यूक्रेन में और रशिया. एंड उसके साथ आर्टिलरी स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स वेर एग्जीक्यूटेड. पर कारगिल में ड्रोन्स नहीं थे, क्योंकि उन दिनों में ड्रोन्स ही नहीं थे. और artillery was used to destroy roads, building and infrastructure and deny defensive capability of Ukraine. कारगिल में ये नौबत नहीं था, क्योंकि ये पूरा लड़ाई पहाड़ों में हुआ है. पर इसमें बड़ा सीख है, क्योंकि अगर हम चीन के साथ लड़ाई होगा, पीएलए के साथ, यही मिलेगा हमें. इनफैक्ट हमें इसमें फायदा है, क्योंकि चाइना हैज गॉट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर. If China has more infrastructure, you can target that more. And China, the terrain is flat. So actually, if you analyze the terrain, in Tibet it is open and flat, in our side it is steep.
Where it is steep, it is difficult to engage targets. Where it is flat, it is easier to engage targets. So, from that terrain point of view only, China will have a tough time. And of course, we now have longer range weapon systems with which we can, do a lot. In the end, I'll talk about it a little because the weapons I have explained to you in that earlier, you know, Indian artillery yesterday, today, and tomorrow. Today, I will just talk how we can use them. Okay, और यूक्रेनियंस ने ये M777 को इस्तेमाल किया है टू कैरी आउट स्पॉइलिंग अटैक्स. ओके, दूसरी बात एक समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग इज लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम्स. हाइमार्स जिसका रेंज 80 किलोमीटर है, यूक्रेन को दिया गया था बाय यूएसए और उन्होंने इंटरडिक्शन, आइसोलेशन, डिस्ट्रक्शन, डिग्रेडेशन और डिनायल के लिए इस्तेमाल किया. हमारे पास इसका इक्वलेंट है पिनाका जिसका भी 80 किलोमीटर का रेंज है. ये चीज हम सब कर सकते हैं जो यूक्रेन में हो रहा है. राइट? ओके, तो अभी मेरा मानना यह है कि अगेंस्ट चाइना वन हैज टू बी स्मार्ट. ओके, बाएं देखिए, the most important and differentiating aspect of employment of artillery between Ukraine and Kargil is surprise. अगर आप अचंबा कर सकते हो, सरप्राइज कर सकते हो दुश्मन को, आधा आपने लड़ाई जीत लिया. और ये फर्क यूक्रेन और इंडियन आर्टिलरी में, कारगिल में, ये था सरप्राइज. मैं आपको बताता हूं क्यों. ऊपर देखिए, everyone was surprised that Russia did not use artillery offensively in the initial phases of the Ukraine war. Overwhelming use of artillery in its Donbass offensive phase was expected and inevitable. जब इनको सरप्राइज करने का मौका था, इन्होंने किया नहीं, क्योंकि सब सोच रहे थे कि ये होगा. दे सरप्राइज बाय नॉट यूजिंग आर्टिलरी इन द फर्स्ट फेज, जब ये कीव की तरह बढ़ के आए थे. तब मैं सोच रहा था कि इनका आर्टिलरी इतना है, ये इस्तेमाल ही नहीं कर रहे. जब डॉनबास में इनका शुरू हुआ, बकमुट में वगैरह वगैरह, तब तक तो सबको पता था कि आर्टिलरी के साथ आएंगे. राइट? नीचे देखिए, इन कारगिल, Pakistan did not even imagine that artillery could be deployed at such scale and much less used the way it was in high altitudes. उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा, इसके बारे में थोड़ी देर में जिक्र भी करूंगा, कि ऐसे आएंगे हम तोपखाना लेके. India's employment of mass artillery in a destructive role, especially the destruction wreaked by the Bofors, were a strategic and tactical surprise for Pakistan. It swept them away completely. वो पूरा ये बाढ़ की तरह ये हमारा आर्टिलरी ने पाकिस्तान के ऊपर छा गए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा कि हम इतना आर्टिलरी लेके आएंगे. और ये वो जमाना है, हमारे पास सिर्फ 24 बोफर्स रेजिमेंट्स थे, और उसमें भी पूरा हम कारगिल लेके नहीं गए, क्योंकि कुछ ऊपर भी जरूरत था, कुछ ईस्टर्न कमांड में भी जरूरत था, कुछ पाकिस्तान के अगेंस्ट नीचे रेतीली इलाके में भी जरूरत था. पर जितने हम लेके गए, उनके सर पे ऐसे लगाया कि वो याद रखेंगे. उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हम इतना आर्टिलरी बिल्डअप करेंगे. इसके बारे में थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा कैसे बिल्डअप किया हम. पर आप भी सोचिए, हमारे पास आर्टिलरी ज्यादा है, रोड और भी हैं, और टारगेट भी बहुत है. और इंडिया और चाइना का जो लड़ाई है, वो ऑल अक्रॉस द फ्रंट नहीं हो सकता. ये मेरे से लिख के ले लीजिए, मेरे जीते हुए नहीं हो सकता. अगर हो गया तो चाइना कोलैप्स हो जाएगा. क्यों कोलैप्स होगा?
भले ही वो हमारे ऊपर फायर पावर के साथ हावी हो जाए, पर उनका गवर्नमेंट गिर जाएगा। क्योंकि वॉर जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देश को वॉर जीतना इंपॉर्टेंट है, उसमें हार जाएंगे, उनको पता है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में मैं बहुत बात भी कर चुका हूं। हमारे लिए ये यूक्रेन की लड़ाई से क्या हम लेसन्स लेके जा सकते हैं, वो थोड़ा पढ़ेंगे। दाहिने देखिए, सॉरी, पहले हम बाएं देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। Pakistan gained renown when their artillery was used imaginatively and prime on the battlefield. They achieved infamy when they ran short of firepower. थोड़ी देर में बताऊंगा। जब पाकिस्तान ने अपना तोपखाना पहले पहले जब घुसपैठ हुआ था मई 99 में, फर्स्ट वीक ऑफ मई 99 में, उन्होंने आर्टिलरी को बहुत आक्रामक इस्तेमाल किया था, ओरिजिनल तरीके से इस्तेमाल किया था। जब उन्होंने उतना इस्तेमाल किया था, बहुत ही प्रभावशाली था। पर बाद में जब हमारा आर्टिलरी आ गया उधर और इनके पास आर्टिलरी बचा नहीं, खत्म हो गया इनका कहानी। We gained infamy initially when artillery was inadequate and relegated to a sideshow. It was only when artillery was restored to its prime importance on the battlefield that India could gain renown. पहले जब मई के पहले हफ्ते जब हमने ये घुसपैठियों के बारे में हमें पता चला और ये पता चला कि वहां पाकिस्तान की फौज थी और आर्टिलरी के साथ थी, कुछ लोग हमारे जो पहले पहले कमांडर्स, उन्होंने छोटे मोटे अटैक ट्राई किया बिना आर्टिलरी के। जब उन्होंने वो ट्राई किया तो मात खा गई। बाद में जब जून के अंदर पूरा हम तोपखाना लेके गए तो पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। पाकिस्तान को पीछे ही हटना नहीं पड़ा, वो हार मानना पड़ा। एंड उसमें क्या है कि हम तब से सब बोलते हैं आर्टिलरी वन द कारगिल वॉर फॉर इंडिया, और बोफोर्स का बोलबाला हो गया, राइट। तो क्या है, हम डिसइंटीग्रेशन से लेकर इंटीग्रेशन तक गए। जब पाकिस्तानी क्या है इंटीग्रेटेड बैटल शुरू किया और वो डिसइंटीग्रेट हो गए, राइट। और बात यह है कि वी नीड टू हैव सेंसर्स एंड शूटर्स का, इंक्लूडिंग स्पेशल फोर्सेस का इंटीग्रेशन, एयर एंड ग्राउंड एलिमेंट्स का इंटीग्रेशन चाहिए। ये सब सीख है यूक्रेन से। फायर पावर को डिटरेंस की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ये जो इसका पूरा जो मैं बात कर रहा हूँ इसका लाभ उठाना चाहते हो, जो इंडियन आर्टिलरी यस्टरडे टुडे एंड टुमारो, कल जो मैं आउट करूंगा उसको भी देखिए। उसमें मैंने बोला था कि कल का और आज का आर्टिलरी जो है डिटरेंट लंबे रेंज के साथ, जब हम उनके रोड्स और कम्युनिकेशंस के ऊपर हावी हो जाएंगे। हमें वी नीड टू डेवलप डीप बैटल कॉन्सेप्ट्स, कंट्रोल एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशंस, खास करके चाइना के अंदर, तिब्बत में। वी हैव टू ओवरकम हिमालयन टेरेन बाय लॉन्ग रेंज वेक्टर्स। न्यूक्लियर एनवायरनमेंट सेट्स कॉन्फ्लिक्ट थ्रेशोल्ड्स, क्योंकि अभी चाइना भी न्यूक्लियर देश है, हम भी न्यूक्लियर देश हैं। बार बार हमें पूछा जाता है कि क्या लड़ाई हो सकता है? लड़ाई उतना नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट है वो अगर एक ओर पे रखोगे और जो 2020 में ईस्टर्न लद्दाख में जो हुआ है वो एक एंड में रखोगे, तो अगला लड़ाई इन दोनों के बीच में किसी तरीके से इंटेंसिटी से होगा। It actually sets a threshold, either end of what can happen in a Indo-Sino-Indian conflict. It can happen lesser than that. But if there's a serious conflict between India and China, it'll be somewhere between Kargil and what happened in Eastern Ladakh, because any battle going beyond that, the nuclear deterrence will come into play. Of course, fire ambushes, spoiling attacks, track and destroy operations, ये सब करने की जरूरत है। इसके बारे में बात भी करेंगे। और हमें रिवाइज करने की जरूरत है द कॉन्सेप्ट दैट फायर पावर इज अ सपोर्ट सिस्टम इन बैटल। ये सपोर्ट सिस्टम नहीं है, ये दिस इज अ बैटल विनिंग फैक्टर। अगर आपको कल बैटल जीतना है
आर्टिलरी हैज टू विन द बैटल फॉर अस, नहीं तो आप हार जाओगे। बड़ा क्लियर है। ओके, अभी हम देखते हैं कारगिल में क्या हुआ। ओके, अब देखिए, अब ये नेशनल हाईवे 1 अल्फा, ये मैप का लेफ्ट कॉर्नर में देखिए, इट रन्स फ्रॉम श्रीनगर, गोज टू गुंड, सोनमर्ग, मस्को, द्रास, कारगिल, बटालिक वगैरह वगैरह। और ये डॉटेड लाइन एलओसी है। ये टाइगर हिल, तोलोलिंग वगैरह हमारे यहाँ एलओसी के साउथ में हमारे यहाँ है। फर्स्ट वीक ऑफ मई में देखा गया था कि ये सब घुसपैठ यहाँ इनको कैप्चर कर लिया। जब इनको इसके ऊपर जाके बैठ गए, राइट, ये जो रोड है नेशनल हाईवे 1 अल्फा, उसके ऊपर पूरा ऑब्जर्वेशन था और उनका फायर पावर इसके ऊपर हावी हो गया। जब इनके ऊपर पूरा हावी हो गया था, हमारा मूवमेंट इसके ऊपर मुश्किल हो गया। मुशर्रफ का प्लान क्या था? मुशर्रफ का प्लान ये था कि इस रोड को कट कर दो। अगर इस रोड को कट करेंगे तो लेह तक हमारा सामग्री पहुंचना नामुमकिन है, और आगे जाके सियाचिन में भी पहुंचना नामुमकिन है। इसको बंद कर दो तो आगे जाके बाकी सब गिर जाएंगे। पर मुशर्रफ को ये नहीं पता था वो किसके साथ टक्कर ले रहा है। मुशर्रफ टक्कर ले रहा था तीन तत्वों के साथ, तीन तत्वों के साथ या क्या, चार तत्वों के साथ। पहले तत्व इंडियन आर्मी एज अ होल, सेकंड इंडियन इन्फेंट्री, थर्ड इंडियन आर्टिलरी, एंड फोर्थ इंडियन एयरफोर्स। हालांकि इंडियन इन्फेंट्री एंड आर्टिलरी इज पार्ट ऑफ आर्मी। मैं 4 डिफरेंट चीजों में इसलिए बता रहा हूं कि उसको पता नहीं था इनका शक्ति क्या है। एक सामूहिक शक्ति था, है, रहेगा, और एक इंडिविजुअल शक्ति है, वो भी रहेगा, राइट। सो हिज प्लान टू कट दिस ऑफ इनिशियली, उसने कारगिल के में एक एमिनेशन डंप था उसको नष्ट कर दिया और उसमें जीना हराम कर दिया हमारा कि उस रोड के ऊपर हम चल नहीं सकते थे। ओके, और उन्होंने क्या किया, ये पाकिस्तानी गन पोजीशन है, और इस पाकिस्तानी गन पोजीशन को देखिए, इन्होंने ये जो गन इन्होंने इस्तेमाल किया था, बड़ा इमेजिनेटिवली और इनोवेटिवली इन्होंने इस्तेमाल किया। क्योंकि ये जो गन है ये 5.5 इंच सेकेंड वर्ल्ड वॉर का गन है। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इतना हाइट में ले आए, और उसके ऊपर he put overhead protection and he was firing। एंड जब ये फायर कर रहे थे, ये हाइट से ये रोड के ऊपर असर हो रहा था, और मुश्किल में हम थे, बहुत मुश्किल में थे, कम थे गन, पर बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। इसने घुसपैठियों को मोबाइल फोन के जरिए हमारे अंदर भेज दिया, और वहां से ये लोग फायर डायरेक्ट कर रहे थे उनके आर्टिलरी को स्पॉटिंग करके, ऑब्जर्वेशन देके, और डायरेक्ट कर रहे थे, और बहुत इफेक्टिव कर दिया। हम उन दिनों में बड़ा मुश्किल में थे। ये देखिए, ये एक गन पोजीशन है, और आप मानिए ये गन पोजीशन इधर है, और सामने जो है आपका टोलोलिंग टाइगर हिल का कॉम्प्लेक्स है। अगर कोई उसके ऊपर बैठा है आपको पूरा नजर आएगा, और अगर गन उसका उधर है तो आपके ऊपर, आप खुले जमीन पे हो, आपका क्या होगा हालत। ये कष्ट था उधर, और पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया, राइट। ये पहले पहले हफ्ते में क्या क्या हुआ इस मैप में दिखाया गया है, राइट। तो मस्को में, काक्सर में, दरास में तो, राइट, दरास के हाइट्स में, कारगिल में, बटालिक में, ये सब आ गए। दरास का मतलब टोलोलिंग और टाइगर हिल, राइट। इतने आके दे हैड प्रिपेयर्ड डिफेंसेस सपोर्टेड बाय आर्टिलरी। ओके, ये देखिए द्रास वॉर मेमोरियल है, यू कैन सी तोलोलिंग कहाँ है, सब वी वर एब्सोल्युटली एक्सपोज्ड। ओके, इस हालत में हमने आर्टिलरी बिल्ड किया,
और ये पाकिस्तानी ने क्या बोला ये मैं पढ़ के बताऊंगा आपको. As per a Pakistani account, India used frontal assault supported by limited artillery in the first week of the conflict. जो मैंने पहले भी बताया, हमारे पास कम आर्टिलरी इस्तेमाल किया, हमने सोचा कि उनको धकेल देंगे. After suffering heavy casualties with little success, हमें बहुत casualties, 50%, 60% of the casualties जो हमारे कारगिल में हुए ये पहले 10-15 दिन में हो गए. It took several weeks to build up the troops and equipment needed to launch an effective counterattack. The Indian Army began its offensives in the first week of June and using high volumes of artillery fire and supported by Indian Air Force strikes, the Indian Army troops recaptured the heights in Dras and Kargil area. Air Force भी ले आए इसके सर पे, आर्टिलरी ले आए और हमारा इन्फेंट्री ने मूव किया और कैप्चर कर दिया. और हमें टाइम लगा इन द फेस ऑफ द एनिमी. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कैसे किया थोड़ी देर में बताऊंगा. एंड दे डिड नॉट बिलीव इट. दे कुड नॉट बिलीव इट एट ऑल. ओके, सो फर्दर artillery won the war for India by pulverizing Pakistani defenses to smithereens in Kargil. हम सब बोलते हैं यूक्रेन में बहुत शेल फायर हुए हैं वगैरह वगैरह. वी फायर 2.5 लाख बॉम्ब, शेल और रॉकेट्स हमने फायर किया और ये सब फायर हुए हैं 10-15 दिन में. टाइगर हिल के ऊपर, सिर्फ टाइगर हिल के ऊपर हमने 9,000 गोले फेंके. During the peak period and on average, each artillery battery fired over 1 round per minute for 17 days continuous. 2 हफ्ता हम यही फायर कर रहे थे, 1 राउंड पर मिनट. इसका मतलब 1 घंटे में 60 राउंड, 24 घंटे में इंटू 60, 1200-1300 राउंड. तो जब लोग बोलते हैं हमें कि भाई यूक्रेन में इतना लड़ाई हो रहा है, इतना फायरिंग हो रहा है, क्या हम कर सकते हैं? हम करने 20 साल पहले कर लिया. आप याद रखिए कि उन दिनों में हमारे पास उतना आर्टिलरी नहीं था, उन दिनों में हमारे पास उतना एम्यूनिशन नहीं था. उन दिनों में हमने फायर किया तो आज क्यों नहीं करेंगे? The Pakistanis were simply outgunned. Such intense firing was seen only after the Second World War. After that war, it is now only in Ukraine that such intense firing is being witnessed. उससे पहले नहीं. Right? ये मैं थोड़ा मुश्किल है. मैं terrain, ground and weather and all other factors might deter, inhibit or preclude employment of air, infantry and armor, but very little deters artillery. Artillery से आप बच नहीं सकते हो लड़ाई के ऊपर. हवाई जहाज नहीं आ सकता क्योंकि वेदर खराब है. इन्फेंट्री हो सकता है, इतने ऑब्स्टिकल से वो पार नहीं हो सकता. क्या आर्मर तो जाएगा नहीं पहाड़ों में, पर आर्टिलरी का गोला पहुंच जाएगा. वो ये कायम है. यही मैंने एक पिछले जो इंडियन आर्टिलरी यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो में मैंने बात किया कि वेयर अ गोट कैन गो, अ मैन कैन गो. वेयर अ मैन कैन गो, ही विल ड्रैग हिज गन. And where he will drag his gun, he will destroy the enemy. ये मैंने बात किया पिछले इसमें, दोबारा देखिए. Okay, the terrain conditions during the Kargil war in the Himalayas were almost similar to the Rasputita conditions in Ukraine. क्यों? यूक्रेन में जब वो रास्पुटिटा कंडीशंस थे तो ये जमीन में दलदल हो गया और पूरा इनका artillery or all equipment of Russia could go only on tracks and roads. वहां भी वही है. हिमालयास में वैसे भी नहीं जा सकते लेफ्ट राइट, जगह कम है. सो बहुत इक्वलेंस है हिमालयास और यूक्रेन में और इसका सीख लेना चाहिए हमें. Movement was restricted to limited roads. Move of infantry was severely limited due to the barren high altitude terrain. क्योंकि वो जो ऊपर बैठे थे
बिल्कुल बिल्कुल क्लियर था कि हम हमारा इन्फेंट्री कहाँ से आ रहा है। देखिए कोई कवर ही नहीं है। द्रास में जो वो वॉर मेमोरियल के पास जो पेड़ और पौधे हैं हमने लगाए हैं। जब मैं पहले बार गया था वहां कुछ नहीं था, बिल्कुल साफ, आपको साफ नजर आ रहे थे पाकिस्तानी बंकर्स वगैरह पोलोलिंग के ऊपर। क्योंकि पहले पहले हमें वहां लेके गए थे हम, और हो सकता था कि हम भी उस अटैक में शामिल हो जाए। फिर हमने पूरा रेकी वगैरह किया, हमें बताया गया वगैरह, और फिर हमें बताया, एक और टास्क दिया गया, क्योंकि हम सब ईस्ट से यहाँ शिफ्ट हुए थे। ओके, employment of air was restricted by fickle Himalayan weather, political issues, and reasonably effective air defenses of the Pakistani. वहाँ कारगिल में हम एयर को फ्रीली इस्तेमाल नहीं कर पाए, पर आर्टिलरी को इस्तेमाल कर सकते। और वही बात हो रहा है आजकल यूक्रेन और पाकिस्तान, रशिया में। अब देखिए एयर का कोई बोलबाला नहीं है वहां, ज्यादातर रॉकेट्स, मिसाइल्स और गन्स। खैर उन दिनों में हमारे पास इतना लंबे चौड़े रॉकेट्स और मिसाइल्स नहीं थे, पर ग्रैड बीएम थे, ग्रैड बीएम को इस्तेमाल किया हमने। पर आजकल तो है हमारे पास। कारगिल बैटल्स वर लार्जली फॉट बाय इन्फेंट्री एंड आर्टिलरी। ये मैं पहले भी बताया हूं, हमारा इन्फेंट्री से बढ़कर कोई फौज नहीं है इस दुनिया में। इसीलिए अमेरिकन भी आके हमारे साथ ट्रेन करते हैं। Hence, the value of firepower increased manifold. It became the battle winning and defining factor. हमारा आर्टिलरी इतना कारगर नहीं होता तो हमारा इन्फेंट्री भी जीत हासिल नहीं कर सकता। अगर हमारा इन्फेंट्री इतना दिलेर इन्फेंट्री जीत हासिल नहीं कर सकता तो हमारा आर्टिलरी भी इतना कारगर नहीं हो सकता। वो दिलेरी चाहिए था कि हमारा आर्टिलरी को कारगर होने के लिए। उसके बारे में भी थोड़े देर में जिक्र करूंगा। उस वक्त का जीओसी इन सी नॉर्दर्न कमांड ने ये बोला, क्या ऑपरेशन विजय हैज वंस अगेन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट व्हेन द इन्फेंट आर्टिलरी एंड इन्फेंट्री ऑपरेट इन सिनर्जी, वही सिनर्जी, फायर एंड मूव, नथिंग कैन विथस्टैंड देयर ऑनस्लॉट। और मुझे फक्र है कि हमारा इन्फेंट्री और आर्टिलरी मेल बिल्कुल जुड़े हुए हैं। राइट, पाक मिशन adventure in Kargil has not only been defeated but crushed militarily, diplomatically, and politically, singularly on account of accurate and timely delivery of TNT and lead on his head by the artillery, suitably exploited by the brave infantrymen. The regiment of artillery was able to amass large number of fire units in record time over difficult terrain, high altitude, and inclement weather. Notwithstanding, the gunners rose to the occasion and provided extremely intimate and accurate fire support wherever and whenever required by the infantry. इतना तालमेल था हमारा आर्टिलरी और इन्फेंट्री के बीच में, और the kind of firepower we amassed was something fantastic. आज तक कहीं इससे पहले हुआ नहीं। हो सकता है आगे होगा, बट वो देखने वाली बात है, पर उसका तजुर्बा है हमारे पास। तो कैसे हुआ ये सब? अंडर हॉस्टाइल कंडीशंस, इन हाई एल्टीट्यूड, इन ट्रेचरस सिंगल वे रोड्स। वो NH1 अल्फा उस वक्त एक तरफा था। इंडियन आर्मी कंसंट्रेटेड मोर देन 20 आर्टिलरी रेजिमेंट्स। 20 आर्टिलरी रेजिमेंट्स का मतलब 360 गन्स। एक रेजिमेंट में 18 गन होते हैं। Of 105 mm guns, Bofors, 120 mm mortars and Grad BMs. और जब ये 20 आर्टिलरी रेजिमेंट वहां पहुंच गए, एक्चुअली रेजिमेंट गिनेंगे तो आर्टिलरी रेजिमेंट्स वर मोर देन इन्फेंट्री बटालियंस, और दे वर ऑल डिप्लॉयड अंडर डायरेक्ट एनिमी ऑब्जर्वेशन एंड फायर। पाकिस्तानी हमें देख रहे थे और हम डिप्लॉय करते गए, और वो कुछ नहीं कर पाए, और रात में हम डिप्लॉय करते थे। This in-the-face deployment was unconventional due to terrain and limited gun areas available. आप यकीन कीजिए, वो जो इलाका इतना पहाड़ी है और उतना जगह कम है कि आप हर जगह जाके आप डिप्लॉय नहीं कर सकते हो। पर इसके बावजूद हमने
बना दिया, और डमी गन पोजीशंस भी, जाली गन पोजीशन भी बनाया हमने, एमिनेशन स्टॉक्स को बिल्डअप किया हमने। और उस जमाने में कोई ड्रोन्स और यूएवीज नहीं थे, पर हमारा जो यंग फॉरवर्ड ऑफिसर्स और बैटरी कमांडर्स ये इन्फेंट्री के साथ आगे गए और इन फायर को कंट्रोल किया हर असॉल्ट में। राइट, अभी फायरिंग के बारे में बात करेंगे कुछ। Firing in the steep Himalayan slopes was so accurate that the infantry would at times call for artillery support as close to 40 meters. बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा फायर हमारे खुद के जवानों के नजदीक आता था, पर इतना एक्यूरेट था वो हिलता नहीं था। 40 मीटर वो है सेफ्टी डिस्टेंस, अगर थोड़ा आनाकानी हो गया तो हमारे जवानों के ऊपर हम खुद फायर करते होते। इतना एक्यूरेट फायरिंग था हमारा, और इतना कंट्रोल था, और इतना दिलेर थे हमारे इन्फेंट्री के, हमारे फायर खुद का फायर को 40 गज तक आने दिए। आपको बताना चाहता हूं, एक बोफर शेल का जो मार का इलाका है वो 40 मीटर है, थोड़ा इधर उधर होता तो ये हमें खुद लपेट लेता। कभी कभी 100 to 120 guns were fired at times in concert, साथ साथ एक टारगेट के ऊपर 100 से 120 गन फायर होते थे। डायरेक्ट शूटिंग बाय बोफर्स spelled terror amongst the Pakistanis and had a devastating effect in the destruction of enemy bunkers. और इस तरीके से करने से काफी एमिनेशन बच गया, क्योंकि टारगेट को देख के टाइगर हिल के ऊपर मारते थे, तोलोलिंग के ऊपर मारते थे। और ये क्या है, लास्ट देखिए, फायरिंग ओवर 100 guns on a restricted target was like cracking a nut with a sledgehammer and making the enemy cry out, uncle, भाई मामू जी हमें बचा लो, ऐसे रो रहे थे ये। ठीक है, छोटे छोटे टारगेट, उसके ऊपर 100 गन अगर गिरे तो क्या होगा, नष्ट हो गए वो बेचारे। ओके, इसका एक दृश्य देखेंगे हम अभी। राइट, दैट वाज द वे वी फायर्ड। राइट, इट वाज वेरी इफेक्टिव, बहुत ही कारगर फायरिंग था। आई जस्ट गेट माय ओके। राइट, ये क्यों नहीं अंकल बोलेगा हुआ कि भैया मामू मेरे को बचा लो। तो ये हालत था पाकिस्तानियों का। ओके, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखेंगे ये जो यूक्रेन का वॉर है, ये यूक्रेन के वॉर के बारे में बात कर रहा हूं, अभी वापस यूक्रेन में गया। दिस वॉर विल बी एनालाइज माइन्यूटली बाय द चाइनीज। ये वो बहुत सही तरीके से वो बहुत बारीकी से दे विल एनालाइज इट। दे विल गो इनटू ऑल द डिटेल्स द वे रशिया एंड यूक्रेन हैव एम्प्लॉयड आर्टिलरी। हमें याद होना चाहिए, चाइना जो है ना, इट लेस ग्रेट एम्फोसिस ऑन फायर पावर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ रॉकेट्स एंड मिसाइल्स। हमें इसको परखना चाहिए। It also lays a lot of emphasis on fighting wars under conditions of informatization, using precision strike capabilities to paralyze enemy operational system as part of their system destruction warfare. ये जो शब्द, this line I have picked it up from the doctrine. This is what the doctrine states. But India has this additional experience of fighting and winning a war in the high altitudes of Kargil, जो उनके पास नहीं है। Whatever happened in Kargil is a deeply embedded experience, which will not go away even if those who have fought have retired. हम भी कमांडिंग ऑफिसर थे उस जमाने में, हम तो रिटायर हो गए, पर मेरे रेजिमेंट को पता है किस तरीके से लड़ रहे हैं। They have handed over a tradition to those who man the defenses of the nation today. जब मैं अपना रेजिमेंट में जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, हमारा हिस्ट्री लिखा हुआ है, हम किस तरीके से उन दिनों में फायर करते थे, कैसे करते थे, वो सबको पता है। और ये जो बैटल एक्सपीरियंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लड़के मेरे सामने आए वो आजकल लीडर्स हैं, जेसीओस एनसीओस वगैरह वगैरह। दिस, ये जो ट्रेडिशन है ना हमारा
आर्मी के अंदर ये बहुत ही निर्णायक होगा। और उसके ऊपर हर आर्टिलरी रेजिमेंट और हर आर्टिलरी यूनिट तकरीबन सियाचिन के ऊपर जाके इन्होंने काम कर लिया, अल्टीट्यूड्स में जाके काम करते हैं, फायर करते हैं। ये दिस इज अनमैच्ड। ओके, आगे जाके वी नीड टू गो टुवर्ड्स द स्मार्ट आर्टिलरी। व्हाट इज द स्मार्ट आर्टिलरी अबाउट, ऑल अबाउट? वी नीड टू एनालाइज पीएलए आर्टिलरी। You need to analyze the terrain, what is existing in Tibet today and what will be in futuristic as uh, China develops its infrastructure. We need to appreciate where they will deploy, China will deploy its artillery, and deny that areas to them. You have to carry out surveillance and monitoring all the deployment of PLA artillery, including their ammunition dumps, hides, deployment areas, PPs, routes वगैरह वगैरह। टारगेट फोल्डर डेवलप करने की जरूरत है, हम करते होंगे, ऐसी बात नहीं है। We need to make surveillance with other vectors. We need to target PLA artillery. PLA artillery को अगर हम नष्ट करेंगे, जिस तरीके से हमने पाकिस्तान आर्टिलरी को नष्ट किया था, हम हार, हमें हमारा जीत कायम है और PLA का हार कायम है। We need to deny space for artillery to deploy, carry out track and kill, firepower ambush, transborder operations, मोबाइल एंड रोविंग आर्टिलरी, ये सब हो सकता है हमारी तरफ से। और अच्छा एमिनिशन मैनेजमेंट होना चाहिए, राइट? ओके, एक ये किताब है जो जनरल कर्नल अजय सिंह रिटायर्ड, उन्होंने लिखा है ऑन रशिया यूक्रेन वॉर। इसमें मैंने फायर पावर के ऊपर पूरा चैप्टर मेरा इसमें है, और उसी फायर पावर चैप्टर से मैं आज काफी जो मैंने लिखा है वही आपको प्रस्तुत किया हूँ, राइट? ओके, और इसके अलावा अगर आपको फायर पावर और आर्टिलरी के ऊपर दिलचस्पी है, आप मेरा वेबसाइट में जाइए, और फायर पावर एंड आर्टिलरी का एक अलग चैप्टर है, उसमें बहुत लिखा मैंने। I have written a lot about artillery and firepower, over about 25-30 articles in my website, and these are all modern thoughts which I wrote after I retired, after thinking how we should handle the future, including precision, ये वगैरह वगैरह जो आप लोग मेरे से सवाल पूछते रहते हो। And I will not talk of any precision, today. I will not answer any question on precision today. Why? I will talk about precision separately one day. I will talk of precision artillery from a effectiveness point of view, from a cost point of view, and all other issues, and development point of view, technology point of view. I have a lot of experience in this, and I will talk about it. And I will talk about guns, I will talk about missiles, and I will talk about rocket artillery, precision. That I will talk technically other day. Today is more about what we did in Kargil. Okay. Right. So I will now start taking, all the supers first, and then I'd like to first welcome a new member. Thank you. और मेरे साथ शरीक हो जाइए. I'll welcome all my members separately. Uday Perry, good evening. You are also a member, so thank you. Rajat Mukherjee, for the first time I'm seeing. Please talk about rocket-assisted artillery shell. I'll talk about it later. ये है. Srinivas, salute. Yeah, I think it's got over. There's no problem. There's no issue. Akshat says artillery is the god of war. Good show, sir. Thank you. It's not me alone. Venkat, thanks a lot. Please stick your textual, not with your mobile number, UPI code on the screen. I'll do that. To be very honest, I really don't know how to do it. Someone has to tell me you can put it, I'll do it. I'm an old guy. You'll be surprised I don't have Google Pay, any pay I don't have. I still go by credit card and actual cash. I'm a bit old type of a guy. Sri Harsha, amazing. You must be amazed because this is your artillery and this is your army and this is your infantry. Okay, I will say not yours, it's ours. We should be proud of our army. We should be proud of our armed forces. I am.
Right. Kalpesh says, listening to you is a pleasure, General Sir. Thank you. Welcome. And Samrat, my old friend, says, engineering brilliance. Yeah, it is. We engineered this victory. We need to engineer more victories for the nation. Tarun says, Jai Hind. Yeah, great. Thank you, Tarun. Jai Hind to you. Regarding fire and move, if an army is on the offensive and trying to take land from a neighbor, what's the ideal terrain for? Look, any terrain is what you have to fight in. You have to fight in the terrain which you are. You don't have a choice of choosing terrain. But every terrain offers you to fire and move. If you do not fire and move, you will lose the battle. Uh, Vishwanathan, Namaskaram. Transformer agenda. What is the basic difference between the role and application of artillery gun over a battle tank? Hmm. Artillery gun fires long range. It's indirect fire. It fires lot of volume. A tank is limited. Fundamental, the shell is almost the same. Of course, tank has anti-armor ammunition and all that. Tank gives you shock and awe. Artillery gives you absolute grinder. Okay, so the gun per se, the barrel construction, almost the technicalities are the same. The application of this thing is different, but some other day. Okay, don't you think? No, forget about drones. They don't pay. You know, the, you don't have 340 drones to come and take out 340 guns deployed. I just taken 340 in thing. We have over 2,000 guns. You can't take all of them out. Drones are being overstated. Drones have a different way of being handled. Application is wider, but they are not the be all and end all. You cannot beat a gun. Yeah, Vishwanathan, I'm not going to take your answer question now. Some other day. Uh, yeah, as usual, our presentations are. Thank you. Okay, I'll take one of your questions. Artillery and tanks well work well in open terrain and plains. How about dense urban areas and mountains? Yeah, look, we were shooting up from the valleys on open terrain. Please understand, that's the most difficult thing where we didn't have gun positions. That's what I was trying to tell you. We did the most uphill task. The easiest thing is to take guns up and fire from top, which Pakistanis had. Pakistani had all the advantage and they lost it. Okay, Kumar, good evening, and everyone. Plus the press the like button. Kumar keeps telling this regularly. Thank you, Kumar. You're a great guy. Right. Uh, Agarwal, Mukesh, thank you. Shouldn't we move away from our fix with Russia? We have already moved away. Okay, let me take 1 minute to explain this to you. When I was commissioned into the regiment of artillery, जब मैं regiment of artillery में आया था, हमारा artillery जो है था काफी British artillery था और हमारे पास Russian artillery था. अभी क्या है? बाद में धीरे धीरे वो Russian artillery बन गया क्योंकि हमारे पास ज्यादा Russian artillery था. But that's what I told. Oh, again, all of you, please see this that other one again. कौन सा? Indian artillery yesterday, today, and tomorrow. I will repost it tomorrow morning. Okay. But of late, Indian artillery is a indigenous artillery. We don't have any nata with Russia, except one weapon system, Smerch. We make our own ammunition, we make our own fuses, we make our own charges. We manufacture our own guns. We don't need anyone. We manufacture our own rockets. We manufacture our own rocket systems. We have our own technology for extended range ammunition, which I am developing, so I can vouch for it. So we are on a different path. That's what I told you last time. Please go over it again. So obvious it is Agarwal Mukesh. Thank you for your contribution, but please see my videos more, which is more important. Cyber warfare. Praveen Sani, forget it. He's never fought a war. He was a short service officer who left after 5 years. He was in artillery. So I know where he is. If you start looking at Praveen Sani kind of people, you can forget it. Zong Buddha, theater commands. Today morning only I put out a video with General, Narayanan. Have a look at it. You'll know what it is. Okay.
Thrive Fitness Solution. Thank you for being there. Right? Thanks a lot. Thanks a lot for this. Again, you've been so kind. Thank you, sir. Yeah, it's not a pearl of wisdom. I just talk common sense. I have another new member. Welcome. Right. See, okay, I'll answer this question. Why Pak didn't use its air force? The thing, Pak did not use its air force in Kargil because Pakistan said their army and their forces were not involved. They kept consistently saying this was by freedom fighters and insurgents and mujahideen and all that. Their army was not involved. They refused to even take their dead bodies. They were on a mode of denial that Pakistan was not involved. They couldn't use air force. If they had used air force, it would have been war, and they were not prepared for it. Okay, is there any metallurgical limit in terms of how many shell fire can be fired in a gun by the gun? Yeah, there are limits. Okay, there are methods to offset those limits also, and there's a life of a gun. Once that life of the gun goes, you change the barrel, right? So we have methods for do that. We have spare barrels and all that, so there's not a problem. Uh, Good. No, Colonel Chaudhary, who's a Kargil veteran, was with artillery. Say hi to him from my side. He would know me. Uh, Kargil planned by high Pakistan generals. Yeah, they did underestimate Pakistan. Pakistan has a problem. They are a first half army. First half they're very good. Second half they lose it because they don't think through the whole thing. And I'm going to talk about this on Tahir Gora's channel someday. One of these days. We have okay. Uh, I would not like to talk of these things. That's why I put this. This is a completely a political channel. I respect all political parties. I respect all religions. That's my credo. That's the army credo. I have served under all defense ministers of this nation ever since I got commissioned. I served under all prime ministers. For me, all prime ministers were Indian prime ministers. It didn't matter me which political party they are from. I might have a different political view. I might not like BJP, I might not like Congress, I might not like DMK, I might not like TMC. But if that person is holding an official position, I respect him. So don't come in this channel ever and talk about politics. If you do that, any one of you, I'll block you out. I'm very angry on this. I have served with Hindus, I've served with Christians, I've served with Punjabis, I've served with Sardars, I've served with Muslims. For me, all are equal. That's the Indian Army credo. For God's sake, we are Indians. You might have a different view, you can vote for whom you want, but do not denigrate any one of them in public in front of me. Yeah, when the God speaks, even the Yamraj is listening. Yeah. Yeah. Thanks a lot, Vibhav Panandikar. Panandikar. Thanks. You're from Singapore. For the first time you're coming. Thanks a lot. Singapore, I've been. Nice place, but very strict. Right? Okay. I'll go over most General Shankar. What are we doing from an intelligence perspective to prevent incidents such as Kargil? That's something I'll talk about in a different episode. We have a long way to go on this. Eshan, thanks a lot, sir. What kind of difference do you see advanced unmanned vehicles currently under development by India and China making in that theater in the near future? I'll talk about this again separately, Eshan, because these are technical things which need a lot of things. In fact, let me confess with you, it's just today. I was sitting in the aerospace department, my aerospace department in IIT Madras, and we're thinking of making a low-cost UAV which is reusable
which even if you lose, you can. It doesn't matter. Okay, and with low end sensors but high end digital imagery, and we're going to change our entire concept. Okay, and that's something which we have to do, because technology is not about making things costly. Technology is about making things cheap also, and technology is being innovative. So we are trying an innovative solution. Someday I'll come and discuss with all of you the design features of various UAVs, and we are trying certain things. We've had interaction with a lot of people, and we'll this thing. Yeah, artillery with robust ISR can imagine, and yeah, we are uh, we are well okay. Don't worry about it. Mm. Okay, JP, I'm going to not take your questions. I'll tell you why. Because yesterday you came and said I told you that I'm going to Jaipur Dialogues to talk. You go there and give a super sticker to him to ask me a question which you couldn't ask me in my talk. ये यार अजीब बात है. हम आपके हर सवाल लेते हैं, आप चाहे सुपर स्टिकर दो या ना दो, टाइम लेते हैं. आप जाके जयपुर डायलॉग्स में मेरे को सवाल पूछते हो आप. मैं नाराज हूं. योर क्वेश्चन यू विल कीप कीपिंग विद यू ओनली. यू keep you no, if you're so fond of giving super stickers, start giving. Okay, Santosh, thanks a lot. Yeah, you're the first time, so I'm going to get you on. Thank you, sir. Welcome. Okay, do private companies in India make 155 shells now? We are faced with. No, we didn't face shortage in Kargil. Please don't get to understand these things. These are all wrong rumors. Okay, I was a commanding officer in Kargil, bhai. हमें पता था कितना shell है ये नहीं. I retired as the DG artillery. I know exactly to the last shell how much India has today. Because these things don't change overnight. Okay, and private STEM companies can't make 155 shells and all in India because we have problems or explosives. Not everyone can handle an explosive license easily. Okay, when will he get ramjet artillery? It'll take time. Uh, Look, let me tell you, we'll be the first nation in this world who will have a ramjet artillery shell. That I'll watch for, because I am now clear, we are probably 5 to 6 years ahead of everyone else. Oh, enjoy rain. I'm in Poland. I watch your shows regularly. Very informative. Thank you, Jai Hind. I'm very glad that you watch it in Poland. I understand that Poland is also getting into the equation with UK, Ukraine, and Russia. There are issues there, but then that's another day. Okay. Uh, Right, sir. While firing artillery from our mountains, can choppers? No, no. Choppers, paradropping ammunition and all is for limited purposes, for a few things only, not for everything. You can't do it every day. Okay. Uh, for gem starting, getting over obstacles, emergency resupply, all that. We did use, okay. Now that you asked this question, let me tell you. आप जरा, all of you who are interested in this, see the video I did few days back with General Kulkarni on 1967 operations and 1987 operations in Sumdrongchu. There he tells you, General Kulkarni, that we used chopper to drop guns and ammunition in Arunachal Pradesh. I was in a battery. I was a battery commander of that battery, which was there, which had been airdropped. We had airdropped in 1987 a battery with all the ammunition. I went there in 91, 4 years after that. I used to go and inspect the ammunition, ye, wo, and all that. And those guns and ammunition has never come back. It's there. And we used to fire there and finish it off. You could do it then. What is it today? 30, 40 years down the line. Just think what our capabilities are. Just that was a 75 mm gun. Today you can do that with a 155 mm gun with Chinooks and M777s. And you can do it with a 105 mm gun with a light field gun.
and of course the motors. Our capability is so high you cannot imagine. Okay, right. So I hope I've answered this question. This is one of the best discussions of artillery at Kargil. Thank you, Venkat. It is also one of the best discussions on our Ukraine. It is, look, my request to you: get all people, get more people. Uh, we have so far discussed the 1962 ops in great detail, 67 operations in great detail, 87 operations in great detail. I have gone into artillery in great detail in two shows. My next thing is I am going to analyze 67 operations, 87 operations, Doklam operations, 2020 operations against Chinese, and Kargil to see what lessons we have drawn and what are our strong points of Indian Army. We don't understand what our strength is. The kind of mobilizations we have done in Kargil and with the kind of mobilization we have done in 87 in Arunachal Pradesh and the kind of mobilization we have done in 2020 in the face of the enemy is something which very few armies have done in high altitudes. Not many people know it, but I'll come back to it on one of these days. It is not only this; we have done much more. The way we have employed our artillery in 67 and in Kargil. That's why I said our artillery is very dangerous for the enemy. Okay, Frank, under Ukraine resisted Russians in the first phase. AVAX early warning system. Russia destroyed Ukraine offensive by using lands. These are all minor issues. Let them keep doing what they want. Uh, do we have enough capacity in artillery shell manufacturing to sustain a full-scale war? Very valid question. I was expecting it. So, on 3rd August, I will be discussing a subject called military stamina of India in war with General Gautam Murthy, who's been the DG Ordnance, and discuss all this. So come back to me and spread the word that I'm going to make all my talks more interesting to all of you. Okay, so don't worry. So worry gamer, yeah, yeah, gone under. Why don't we give TOT? Oh, there are different issues. L&T and all are doing something. You don't get involved with this. It's beyond you. It's brilliant how NATO, US signal intelligence. Forget it. Let's leave it to them. This is not part of artillery. Uday Perry. Why is time span by which full require? It'll never be fulfilled. It should never be fulfilled because by the time something happens, something new should come up. Yeah, uh, water cooled. No, you can't do it. It's only air cooled. Gun, how cold weather will affect? It doesn't affect beyond a point. The moment you fire one round, the barrel gets warmed up. What is the cost of an average 155 mm shell? A dumb artillery 155 mm shell with fuse, projectile, and the cartridge that the charge costs about a lakh. Okay, artillery have been used. No, we didn't need it. Okay. Russian loitering. Yeah, what's the future of art? There are a lot of future of artillery and loitering drones. They have to be mated. That's what I said earlier also. One of the major lessons is how to use drones in concert with artillery and come out with something called a Reiki surveillance strike system. Okay. We have to think of it and people are thinking of it. Don't worry. Vaman, welcome, new member. Then happy Kargil Divas in advance. Sir Jahind, happy Kargil Divas to all of you. You are the future generation. हमने जो करना था कर लिया. Inspiring presentation. Thank you. Right. New guy, new Hironme Isor.
Right. Sir, Lieutenant Colonel P.R. Shankar, sir, name Matram. It's not Lieutenant Colonel, it is Lieutenant General. I was a Lieutenant Colonel in 1995. Okay. Yeah, we will talk of it. Why did IAF have such a bad record? Did not you look? I The point was that IAF could not cross the LC for many reasons. Okay, so they didn't have a bad record. They had a good record. Don't worry. Don't talk ill of them. No one. We should not talk ill of our forces. You should understand the constraints under which you saw how those terrain was. There's something called terrain. You cannot wish it away. Those chaps flew in the very difficult conditions, right? So, right. Polish people are totally unaware of what's happening around or what's happening with them, sir. They're totally surprised with the info I share with them. Thanks to you and Adi Show. Thank you. I'm not going to Adi Show for the simple reason I don't get time. I have to do my own, Gunner shot shows because I think I have to get something beyond what Adi is telling you. Adi does everything. Unfortunately, Adi is just a civilian, right? So he doesn't give you the full input. I think for people who are interested, I mean, you must watch his shows. He's good. There's no doubt about that. I'm not trying to say not to see. Go and see. After all, I only trained him. Uh, I'm taking everyone to a different level because I'm getting the best in India. And I talk with them on my level. For example, tomorrow I'm going to talk of civil military fusion with General Prakash Menon. Join in. It's going to be interesting. We're going to talk something. Because if India has to become a power, our civil military fusion has to be great. Okay, are aware? Yeah, that's fine. Yeah, that's a fair one. What does an artillery battery mean? Artillery battery is of 6 guns. In a battery, there are 6 guns under one battery commander. In a regiment, there are 18 guns under a regimental commander. So when I was, what shall I say, a regiment commander, I had 18 guns with me, and I commanded a 105 regiment. Yeah, he says, Pranam General Shankar, can you please say the role of naval artillery? US Navy uses 155 naval artillery. Does Indian Navy have artillery? Yeah, they have, but the typical coastal artillery which we had is no more there. We'll talk, I'll call someone and then get you to talk on what Navy has. Uh, this this is the coffee table book of the gunners. Okay, this is the coffee table book of the gunners. You have the complete history of artillery in this. Okay, here is President Radhakrishna giving something to someone, and here you'll have all right. This is about accolades. You somewhere you'll find about some other part of history. These are old gunners. So this is a beautiful coffee table book. I'm very proud of it. Right, and I was not general when this was made. When I left the artillery, I made one more of such thing. Someday I'll show that to you also. Right. Right. Ishan comes out with one other thing. So one more question. Do you see missile artillery getting to the point where it is cheaper? No, it will never happen.